things happening in the market in past few trading sessions, and I will be covering today the sectors of Nifty, and will be sharing some short-term stock picks which are good for the week to go. At Epic Learning Center, we try to organize webinar every week for our investors and clients and every trader around the globe. It can be on national as well as an international market. In past, we have been continuously doing a webinar on stock picks which are good to go for the week or which are good in short term in nature. But this particular webinar actually focuses on some of the sector review. As you must have known, recently we have had a lot of upside down in the market. The margin calls were also triggered of the investors. So this particular webinar is on this sector review as well as some stock picks. I would ask you to please have a pen and paper. You can ask your queries at the end of the webinar. At the end of the webinar, about Epic Research. Epic Research Private Limited is a SEBI registered advisory firm. We have been awarded and rated by NSIC SMERA, Dun and Bradstreet, and we have won Leadership Excellence Award, having our presence in India, US, Australia, and Middle East with over 10,000 satisfied customers. We provide need-based expert advice in the domains of equity market, commodities market, COMEX market, currency. We also provide premium research report and corporate research solutions to ultra HNI and over corporate clients. These reports can be accessed on daily equity report or daily equity weekly report, or it can be a commodities report. It can be accessed at our website epicresearch.co, and you can look at them. We try to provide and inculcate most of the data in the report, and you can have a look at them. We also provide some kind of recommendations in these reports. Moving on to the next slide. These are the slides I will cover with you. Trading strategies I'd like to share with you. Then I'll come on to the Nifty analysis, its technical analysis, three charts, but I'll also put off some of the sector charts in this particular slide. I'll be discussing about those sectors and giving their reviews as well in terms to Nifty. So you can ask questions by the end of the webinar if you have any. Epic research trading strategies. These are designed for all our traders and are very strict in nature. If you try to follow these strategy on a very simple basis, you'll try to have optimum results. Uh, what happens is जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं एंड यू आर लाइव इन द मार्केट, आपके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइस आती है, तो एज एन एनालिस्ट वी एट अवर एंड ट्राई टू गिव स्टॉप लॉस टारगेट्स एंड दैट्स इट. बट जो एक्चुअल में ट्रेडर होता है, he has a lot of biasness in his mind. बहुत सी चीज़ें एक साथ दिमाग में आ जाती है जब कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर एक पोजीशन बनाता है. कुछ हर्ड मेंटालिटी हो जाती है, कुछ एंकरनेस बायसनेस आ जाती है, कुछ ग्रीड आ जाता है. तो जब भी आप एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं या मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारे बायसनेस और सोच आपके दिमाग पर हावी हो जाती है. वो चाहे लालच हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होल्ड कर कर रखना हो कि नहीं ये तो मेरे को प्रॉफिट ही देगा, या फिर नहीं इसमें अभी और ऊपर जाएगा, मेरे पास खबर है अभी आपका ब्रोकर बोलता है कि. तो बहुत सारी बायसनेस आ जाती है. बट होता क्या है इनमें, कहीं ना कहीं आप अपना टारगेट अगर आता है तो बुक नहीं कर पाते. आपका अगर एसएल भी
पास में होता है तो आप ऐसा हटा देते हैं कि नहीं, मार्केट ओवरऑल ऊपर ही है, अपन इसमें स्टॉप लॉस हटाते हैं आज, नहीं तो कल आ जाएगा। तो ये बहुत सारे बायसनेस आ जाते हैं जब आप ट्रेड करते हैं। बट अगर आप ये थोड़ी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स में, तो इससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये एक सिस्टम और एक सेटअप बनाती है आपका। जनरली आई हैव हर्ड क्लाइंट्स की क्वेरी आती है, ये शेयर बाय कर रखा है पर्टिकुलर भाव पे, यूनिटेक है, यूनिटेक में 12-13 रुपए से पोजीशन बना रखी है। तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती है, और ये क्वेरीज मेरे ख्याल से तभी आती है जब आप एक पोजीशन होल्ड करते हो और ये स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करते हैं। तो जब भी आप मार्केट में, सॉरी, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें, ये बायसनेस जो है ये अपने दिमाग से हटा दें। फॉलो सिंपल स्ट्रैटेजीज, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेटअप जो होता है, इट इज टोटली सिस्टम जो आपको ऑप्टिमाइज रिटर्न के लिए, it gives you deliver you at the end of the trading session या आप एक particular month, अगर आप ये setup follow करते हैं which is statistical, which is mathematical in nature, जो discipline अगर आप follow करेंगे, तो it will give out the best result in you। अगर आपने ये strategy छोड़कर कहीं ना कहीं आपकी biasness, आपके rumors, आपके होप, ग्रीड, अगर आपने उस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वॉल्व कर लिया, तो आप मानकर चलिए जहां आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वहां आप लॉस में निकलेंगे, जहां आपको लॉस हो रहा होगा वहां आप आपकी पूरी कैपिटल खोकर बैठ जाएंगे। तो प्लीज ये स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करिए। इट इज डिजाइन टू टेक आउट द बेस्ट इन एवरी ट्रेड। ओनली बाय अबव और बिलो द लेवल सजेस्टेड। लेवल के पहले मत बाय करिए, लेवल के पहले मतलब आप एंट्री मत बनाइए। होता क्या है, लेवल के बाद एक पर्टिकुलर लेवल रहता है, उस पे देर इज अ सप्लाई which comes in the market, and there is a demand which also there in the market, so there is a particular level in each and everything, right? अगर आप देखें तो मैं निफ्टी की आपको बात करूं, 8670 एक 61.8% का रिट्रेसमेंट था उसके ओवरऑल फॉल का। तो उसने एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया, जहां लोग खरीद रहे थे 8650 8660 पे, रिटेल इन्वेस्टर्स, वहां से निफ्टी ने एकदम टर्न अराउंड दिया। तो वो 8660 कितना इंपॉर्टेंट लेवल था ये देखिए आप, कि वहां से एक निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये होता है लेवल का इंपॉर्टेंस। ऑलवेज की प्रॉपर स्टॉप लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो इट इज फॉर श्योर कि आपकी जो कैपिटल है वो इरोड हो जाएगी। दैट मीन्स इन द नेचर कि आप अगर 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर है, इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन सिंपल प्रॉफिट टू ऑन लाइक 1000 रुपए या 800 रुपए दिन में कमाना है कुछ ट्रेड्स करके, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, मार्केट आपने देखा एक सीधे गैप डाउन ओपनिंग दी थी और एक 6% की, ऐसे टाइम पे यू लूज ऑल योर कैपिटल। सो प्लीज कीप प्रॉपर स्टॉप लॉसेस इन योर ट्रेड। प्रॉफिट जहां हो रहा हो आपके सिस्टम के हिसाब से या आपको जैसे एडवाइस करा वहां बुक करिए। अगर आप नहीं बुक कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ग्रीड हावी होने दे रहे हैं, यू आर एक्चुअली गेटिंग ग्रीड ओवर योर बायसनेसेस। सो प्लीज बुक प्रॉफिट्स एंड स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करिए आप। इफ यू आर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस, इट विल एक्चुअली स्टॉप योर लॉस फ्रॉम बीइंग हैपेंड। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो इट्स सिंपली like having a risk which is you are naked in the market, and any risk in the market or any volatility in the market can actually affect you। ट्रायल्स में आप मत काम करिए, इट इज ओनली टू ऑब्जर्व। वेन एवर यू आर हैविंग अ ट्रायल, इट इज जस्ट टू ऑब्जर्व। बहुत से ट्रेडर्स अलग रहते हैं, कोई रिटेल ट्रेडर है जो 20,000 से स्टार्ट कर रहा है, कोई अच्छा नया ट्रेडर है जिसके पास एक 5 लाख का कैपिटल है और 10 टाइम पे उसको 40 से 50 लाख का एक्सपोजर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर कुछ ट्रायल मिल रहा है तो आप उसे ऑब्जर्व करिए, देखिए उसको कि ये जो रिटर्न है, ये जो मोमेंटम है कॉल्स का, इट इज सूटेबल टू यू। अगर नहीं है तो टॉक टू दी एग्जीक्यूटिव और टॉक टू दी एडवाइजर हु इज सपोर्टिंग यू। ही ट्राई टू plan out the best plan for your according to you and your portfolio। never over trade। एक दिन में 3 से 4 ट्रेड काफी होते हैं। आप अगर 7-8 ट्रेड करने गए ना दिन में, तो एक्चुअली आप होगा ये कि जहां आप 4 ट्रेड में एक में स्टॉप लॉस लेके 3 में कमा रहे हैं, आप 8 में 3 में स्टॉप लॉस लेके 4 में कमा रहे हैं, तो दैट इज लाइक hurting your profit itself which you have earned in the intraday। So please don't over trade। need no, never trade on rumors। rumors are there in the market। एक बहुत पुरानी we have a saying in the market, uh, buy on rumors and sell on news। परफेक्ट है।
बोलते सही हैं, बट मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब रूमर्स रहते हैं, मैंने पास्ट में देखा है, इवन आई गेट सम मैसेजेस, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट खरीदो, इसका एक जॉइंट वेंचर होने वाला है, या बाय दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी इट इज गोइंग टू गो टू दिस लेवल। सो दैट इज एक्चुअली नॉट a good trading strategy for you. अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, you need to understand there are two factors which are working in the market. There is technical analysis and second is fundamental factors. Fundamental factors सिर्फ रहते हैं तो वैल्यू अनलॉक होती है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, जो एक आपको भाव में 30 से 40% की तेजी तब देखने को मिलती है। जब टेक्निकल एनालिसिस होता है तो देर इज अ टारगेट एंड देर इज अ स्टॉप लॉस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। रूमर्स कभी नहीं होते हैं मार्केट में, देर आर ऑलवेज वैल्यू अनलॉकिंग एंड टेक्निकल indicators which are generating signal on the stock. Rumors कुछ भी नहीं होता है, so please avoid trading on rumors. Always consult our advisors in case of any confusion. जितना ज़्यादा आप communicate करेंगे उतना ज़्यादा will try to have the answer for you. So try to have a better communication with our advisors in case if you have any confusion or query. आप हमारे सारे कॉल्स पे काम करिए एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। एक ही पर्टिकुलर कॉल में पूरी कैपिटल लगाना या 80% 70% कैपिटल लगाना इज नॉट अ गुड थिंग। आप अपनी कैपिटल अगर 50,000 भी है तो उसको 20,000 रुपये एक कॉल पे लगाइए, या 30,000 रुपये बचे हुए आप 20-25,000 रुपये दूसरे कॉल के लिए रखिए। अगर आप एक ही में लगाएंगे पूरा रुपया तो होगा क्या, उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड, मगर अगर पर्टिकुलरली कभी आपको लॉस हो गया, सो यू आर एक्चुअली having a lot of margin which you are taking and exposing yourself to a much bigger loss. So please try to segment wise, or sorry, have a differentiate in your capital, and आप अगर 50,000 है तो एक कॉल पे 20,000 लगाइए, दूसरे कॉल पे 20,000 लगाइए। ट्राई टू डिफरेंशिएट इन 20 to 30% इन ईच कॉल, सो दैट यू कैन वर्क ऑल ऑन ओवर कॉल्स एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अगर एक कॉल में आप 20,000 लगा रहे हैं तो नेक्स्ट कॉल में भी आप 20,000 ही लगाइए। डू नॉट ओवर ट्रेड और ओवर लेवरेज इन पर्टिकुलर कॉल। होता क्या है, कभी कभी देयर इज अ थिंग कि नहीं ये तो एक नंबर का कॉल हमने देखा है, इसमें ये स्क्रिप्ट पिछले 8 दिनों से बग रही है, तो इसमें अच्छा रुपया लगाते हैं। बट होता क्या है, रिटेल ट्रेडर्स के साथ जब वो एंट्री लेते हैं तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सेल करते हैं। आपको एग्जांपल दूंगा वैल्यू लॉकिंग का, और पर्टिकुलर एक ट्रेंडिंग स्टॉक का। आपने राजेश एक्सपोर्ट्स देखा होगा, बहुत अच्छा स्टॉक है, समवॉट एट 200 लेवल्स पे कुछ महीनों पहले ट्रेड कर रहा था। ऐसा एक्चुअली ट्रिपल्ड इटसेल्फ एंड वेंट अप टू 570 लेवल्स, बट दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट वाज सीइंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। जब उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, वहां आप देखना, अगर आप चार्ट एक्सेस करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, और सबसे जो उससे पहले सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो अराउंड 200-250 लेवल्स पे था। तो एक इनिशिएट जो होती है बाइंग, वो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, वो ऑलरेडी लोअर लेवल्स पे थी। जब होता है क्या, एक रैली एंड हो जाती है, when it comes to you, the particular level comes to your news comes to you कि this particular stock has gained from 200 to 500, then people enter in that a particular stock, so which is wrong। actually हम देखें तो 300 रुपए तो ऑलरेडी भग गया है वहां से। आपका रिस्क नीचे में एक करेक्शन अगर स्टॉक में आया तो 100 से 200 रुपए रहेगा, तो आपका रिस्क हो गया भले ही 200 रुपए, एंड वहां से आप कितने रुपए के लिए एंटर करेंगे, 50 रुपए या 100 रुपए। सो योर रिवॉर्ड ओवर देयर इज जस्ट लाइक 3 to 4%, 5%, 10% maximum on the upside, but your downside risk is actually 40 to 50%. So you must understand, if you are going to have risk reward ratio, you must understand risk reward ratio are favorable on very high peaks or very lower. For example, at 7660, 7700 nifty, there were some very good stocks which were getting at a very cheap price। अगर हमने देखा हो तो जब एक ब्लैक मंडे हुआ था मार्केट में लास्ट वीक, स्टॉक्स 25-25% टूटे हैं, बट नेक्स्ट डे आपने देखा हो तो एक 10%, 8% की और गिरावट थी, बट देन दे हैव रिवर्स। जिनको वहां पर एक वैल्यू बाइंग करनी थी उन्होंने एक हैवीवेट शेयर्स में कर ली। सो दिस इज व्हाट risk reward ratio is all about. So please do not change trading capital lots in the middle of the month. This will disturb your risk reward ratio. Those trading in single lot need to book profit in first target itself, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। Please do not have any biasness in your mind if you
Trading in single lot, especially if you are trading in single lot, try to book it in first target itself and get out of the market. Or if you are holding working with two lot, book first lot on your first target, trail your stop loss to cost or just above cost, so that you don't have to include brokerage and pay brokerage, and then wait for second target. This is the Nifty chart I have tried to put down here. This is the Nifty chart. ये एक मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी, अगर आप देख रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक लॉन्ग शैडो छोड़ी है 7660. समवॉट इट इज़ अ 7 लेग पैटर्न, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस में बोलूँगा, जो यहाँ से एक स्टार्ट हुआ था एंड इट टॉप्ड अराउंड 8600. अगर आप इस पर्टिकुलर डाउनफॉल का आप एक रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो इट विल कम एट 61.8 एंड इट विल बी समवेयर हेयर. मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है क्योंकि मैं चाहता था चार्ट आपके लिए बिल्कुल क्लीन रहे तो आप थोड़ा समझ पाएँ इसको. एंड यहाँ पर वो रेजिस्टेंस था. यहाँ से इफ यू कैन सी, दिस इज अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन एंड this is one of the head and shoulders, and 8600 and 8350, and you have 7660 over here. ये आप एक लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखेंगे विच इज कमिंग एट हेयर, एंड ये अपर रेजिस्टेंस लाइन. तो ये एक पर्टिकुलर चैनल फॉर्मेशन है. वी हैव सीन मोदी वेव एंड बुलिश मार्केट फॉर पास्ट 1 ईयर सिंस May 2014 टू February, एंड एक हायर टॉप हायर बॉटम में फॉर्मेशन में था मार्केट. ओवरऑल बुल स्ट्रक्चर ही है मार्केट पे, एंड ये एक करेक्शन है जो ओवर ड्यू भी था, ताकि वैल्यूएशंस नीड टू बी चीप एट टाइम्स बिकॉज वी वर ट्रेडिंग एट हायर वैल्यूएशंस ओवर हेयर. यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक रिस्क एंड मार्केट्स ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ आया. मैंने आपको पिछली बार बताया था ये एक पर्टिकुलर रेंज थी जो 8650 से लेके 8350, तभी पर्टिकुलर टाइम था जब एक चाइना में हमने देखा कि क्रैश हुई थी स्टॉक मार्केट. आपको आरबीआई ने कोई रेट में बदलाव नहीं किया था. आईआईपी डेटा आया जो काफ़ी कुछ अच्छा था, मोर बेटर देन एक्सपेक्टेड, एंड उसके अलावा आपका प्राइस इन्फ्लेशन का भी डेटा आया जो एक एक्सपेक्टेड लेवल्स पे ही था. तो मार्केट ने काफी कुछ यहाँ पर डिस्काउंट करा है. ग्रीस क्राइसिस भी हुआ है जो मार्केट ने यही पर्टिकुलर रेंज में करा. आप देखेंगे चार्ट पे तो जुलाई से लेके ये अगस्त हम एंड हो रहे हैं, एंड इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखें, यहाँ पर जुलाई से अगर आप देखें तो अगस्त में जो एफ एंड स्टैटिस्टिक्स थे वो काफी अच्छे थे. इट वॉज अराउंड एवरेज रोल ओवर of long positions, but somewhat there was a global sell off here, and we have seen a gap down opening. एंड अगर आप देखें तो वो जो 2 दिन का एक प्राइस मूवमेंट था ऑफ निफ्टी ऑफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, निफ्टी बॉटम्ड आउट अराउंड 7600 है. ये एक लोअर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है विच इज कमिंग एट दिस लेवल. इन शॉर्ट टर्म आई डोंट थिंक 7600 7650 शुड बी टेकन आउट. हमने एक पर्टिकुलर गैप ये छोड़ा है मार्केट में जो आई बिलीव दैट शुड बी फिल्ड बाय सितंबर एंड. बिकॉज अगर मैं आपको फंडामेंटली बात करूं तो हमेशा आप जब एक फाइनेंशियल ईयर को एनालाइज करेंगे तो यू विल ऑलवेज सी कि जो पहला क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल ईयर का, आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल मई एंड जून, ये इतना पिकअप नहीं देखते आप इकोनॉमी में, बिकॉज वी एज एन इकोनॉमी हैव अ मच हायर एक्टिविटी आफ्टर अगस्त एंड, बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ festivals lined up. We have a number of you know what do you say, demand pickup in the market, be it auto sector, automobile or FMCG, and especially stocks related to oil will be doing very good in coming time. And we have also seen जो global market में if there is a demand pickup that comes in December because of Christmas and Good Friday. So एक particularly अगर आप financial year को analyze करें तो जून से लेके अगस्त तक के we have always seen market correcting. Why? Because आपका जो डिमांड और मार्केट में कंजम्पशन रहता है, इट इज डिमांड इज वेरी लो एंड कंजम्पशन इज आल्सो एट अ वेरी बेसिक लेवल. तो यू कांट एक्सपेक्ट मार्केट टू आउट परफॉर्म इन दीज 3 months especially. So you need to understand that इस महीनों में, इन 3 महीनों में मार्केट में देर इज काइंड ऑफ करेक्शन विच इज हैपनिंग. एक ग्लोबल सेल ऑफ हुआ दैट एडेड इंसल्टेड टू इंजरी, एंड वी हैव सीन अ 1000 पॉइंट करेक्शन. मैं वेव पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस की बात करूंगा तो दिस इज एक्चुअली वेव पैटर्न 7 लेग वेव पैटर्न विच स्टार्टेड हेयर and it ended around 7660. It's a new waves pattern if you want to know. And
it ended around here. I believe that markets will consolidate between 8100 to 7900 on the downside, which is now a support. हमने अगर आप देखें तो ये एक गैप हमने कल छोड़ा था, ये एक डेली चार्ट है। एंड अगर आप देखें फ्यूचर्स में देयर वाज अ गैप विच वी फिल्ड लेटर ऑन। एंड हमारा जो अभी गैप है मार्केट में चार्ट पे, वो ये पर्टिकुलर गैप्स है जो हमने छोड़ा, एक ये और एक 8350 से लेके 8300 तक का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मार्केट गिरा है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, उसमें से इफ यू सी जो 300 पॉइंट है particularly 250 odd points, on there hasn't been trading done. So we have seen actually 800 points of a downfall. You need to understand that at these levels we'll see a lot of uh, value buying which was initiated, and I believe that there was an institutional buying here as well, though we are cautious at this time. But you need to understand कि we have good fundamentals, बहुत सी चीजें मार्केट ने ऑब्जर्व करी है इस पर्टिकुलर टाइम में। एंड if we have a closing above 80 8090 8050 on a daily basis on the upside, we may see this gap filling, and my targets here would be 8170 and 8170 के बाद 8300, जो हम एक particular trend line हमने देखा है। तो यहाँ से हम will see this to be filled, and this particular gap along with this as well. So I believe that 8350 is one of the targets which you can expect. Buy on dips strategy would be the best if there is not any negative news in the market. And we also have a rate hike of US Federal Reserve in September, but I believe it will be postponed to December. Why? Because आप देखें तो उनके भी जो demand pickup hota hai, that is during November and December. So at that time they are expecting some kind of inflation to be at a higher level, so that actually they can increase the interest rate. So these are the particular factors I wanted to talk about to the market. And if you have any query related to Nifty, you can ask. 7940 and 7900 will be the crucial support over here in this particular market. And if we sustain this, we'll see a gap to be filled by September mid or September end. But you need to understand the market is very volatile over here, and एक दिन में we are seeing 100 to almost 150 points movement in a one particular day. So you need to understand, you need to know where your stop loss should be. If you don't know, you can mail us at info@epicresearch.co. We'll try to have your queries being resolved. This is the Nifty chart. I'll try to have some sectoral indices chart with you. And share their reviews, and which sector should be doing good, which sector would be affected. I'll be sharing, and some of the stocks I won't be giving recommendations on them, but on particular sectors may these particular stocks will be outperforming in the coming time. So you can also ask your queries by the end of the session about some particular stocks, or anything you have misunderstood or not understood, you can ask by the end of the webinar. This is Bank Nifty, somewhat as same as Nifty, but the formation of the pattern of the chart is pretty much same. And if you see as same as Bank Nifty, we have had a Nifty formation, and if you notice that it is also at the lower end of the chart, the trend lines over here are clearly visible, and the formation is pretty much same here as well. The trend line is drawn from January 2015 lows,
though banking stocks have been beaten down as well. But if you see, I'll try to highlight it with pen for you. This is the supports which have happened, and this is the upper resistance line. This was somewhat an inverted head and shoulder breakout, but it failed to breach that, and we have seen a gap down opening here with the same open and high, and it is consolidation between a broad range of 16,800 to 17,150. Now here you need to understand banking stocks are already suffering from NPAs. Uh, we have seen banking stocks like Yes Bank and ICICI Bank being beaten down, but the real effects in banking stocks you'll see by second quarter and third quarter when we'll have a lot of activity in the market. Technical perspective, if you want to know, the RSI was at oversold zone. It has already reversed. There was a bearish signal over here in July when there was a global market fell off, and recent consolidation is actually giving an opportunity for investors who would like to see a movement of like 2000 points in bank nifty, because the price pattern is quite attractive over here. 16,500, 16,400 will be very good support in the near term. The upside you can expect is 17,700 and 18,300 if you have a time horizon of 1 to 2 months, because we are in an overall bull structure. The banking stocks are suffering from NPAs, but you must understand that in an economy which is growing at a 7%, there are banking stocks which will of course suffer from NPAs because the activities will be much higher as compared to in previous financial year. In Bank Nifty, if you are talking about any particular stock, I've seen SBI chart today, one of the good charts on in बैंक निफ्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स. देखिए जब आप बात एसबीआई की करेंगे, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जेस्ट प्लेयर इन बैंकिंग सेक्टर, द हैवीवेट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो जब भी आप एसबीआई की बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि एसबीआई जैसा शेयर particularly heavyweightage तो है ही है, पर the reach of that this particular bank is much better than any other प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक. जब आप एसबीआई मार्केट में ट्रेड करता है तो एक सिंपल सी बात है कि जब सबसे बड़ा बैंक है तो वो अपने साथ एक कुछ प्रीमियम ऐड करता है अपने स्टॉक में, जो काफी कुछ ट्रेडर्स डिस्काउंट करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी ट्रेडेड एट हायर P multiples because it is one of the largest bank in India. So you must understand कि जो SBI अगर ट्रेड कर रहा है तो वो अपने साथ कुछ प्रीमियम पे ट्रेड करता है. तो पर्टिकुलरली एट 248 लेवल्स भी अगर वो ट्रेड कर रहा है which is at a lower level on the chart. अगर चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है but it is at a lower level of chart. 240 and 230 are the near term support. मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से बॉटम आउट होगा. और आप में से कोई एक one of the people who have an idea of investing in the market for like time horizon of 6 to 8 months, I think SBI करंट लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव है. अगर ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक शॉर्ट टर्म में आप 230 का स्टॉप लॉस लेके 262 तक के लेवल के लिए बाय कर सकते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है. मगर आप अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यू कैन ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो, बट आप अपने रिस्क एंड कैपिटल जो आपकी है ट्रेडिंग कैपिटल उसके हिसाब से ही बाय करें. आई वोंट सजेस्ट टू पुट ऑल योर कैपिटल. My time horizon in this particular counter, if you are looking at 8 month, is very good, and 230 अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में for trading perspective. And for long term perspective, well, you can add it on dips because 230 is a quite good support on the chart in near term as well. SBI के अलावा एक Yes Bank is one of the counters which is quite attractive right now. But I won't recommend to buy because I'm somewhat waiting for this counter to have
a break above 710 level, currently at 690s level. It is attractive on the chart with a low risk reward ratio, but if it breaks somewhat 710, we may see it going back to 750. So I've tried to put on a public sector bank as well as a private sector bank. These are the two stocks, and this is the chart of a bank nifty daily chart. You can see the price patterns over here, the downward resistance line and the lower support line, and somewhat prices are seeing consolidation in this range. If we have a break above 17,500, 17,400 on daily basis, we may see a further stretch of to 18,400. ICICI Bank is good, one of the leading banks in private sector banks, but you also have good players like Kotak Mahindra Bank and Axis Bank, which are there because they are competing at a very good level. अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसने particularly मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो एक कासा का रेशियो है ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, उसने काफी कुछ हैवी वेट्स को पीछे छोड़ा उस पर्टिकुलर में. अब यस बैंक को देख लीजिए विच आर ऑफरिंग 6% on their savings account. So you need to understand that private sector banks there is a lot of competition, but I would prefer Yes Bank because it is good on charts as compared to ICICI Bank. My next, if you have any queries related to banking stocks or banking sector, you can ask by the end of the webinar. I'll try to answer them. I'll move on to the next sector, and pharma will be my next sector. CNX pharma has been somewhat better than as compared to Nifty and बैंक निफ्टी, बट अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो वी हैव सीन अ शार्प करेक्शन इन द प्राइसेस. डेली चार्ट पे वी आर seeing somewhat price formation of pharma index between 13,500 to 12,500 broader range. Divi's Lab, Lupin and Aurobindo Pharma has been good. If you are talking about particular stocks, बहुत अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने as compared to Nifty, but जब on Black Monday we have seen a beating down of Vocard Pharma for almost like 25%, and Aurobindo Pharma and other Lupin and Dr. Reddy is going 10% down to 15% down on that day. But pharma stocks are good for a long run. Anyone who tries to or seeks to create a wealth over a time horizon of 5 years or 10 years, pharma stocks are good because they have always given a positive return. And I think Dr. Reddy has been the number one stock in delivering highest returns in the market in the past 10 years. So pharma stocks are good. If someone would ask me, I would prefer Aurobindo Pharma. We have Aurobindo Pharma at 770, 760 levels. It is very good, uh, and we have seen it, splitting before as well. एक बार पहले भी ये split हो चुका है. Then again it went back up to uh, above 1000 levels, and then we have again seen a split. Recent at 770, 780 levels as well. It is good. I think the prices have bottomed out at 720, and if it breaks above 790 on a daily basis, we might see a rally stretching in this particular counter to 840 and 860. I'm not recommending this, but it's good to have a pharma stock in portfolio if you have a 6 to 8 month or 1 year time horizon. It actually averages out the returns. If you are having incurring any loss on any other particular holding uh, in your portfolio, pharmaceutical are best to have in your portfolio because they average out this particular discrepancies in your portfolio and give you the optimum result. Cipla is another counter at 682. It is quite lucrative, and in a short term perspective I think it will be reaching to 718 and 740, while good support in the near term has been formed at a 651. So Cipla is another stock which you can look at in a short term perspectives. While if I want to have a view on pharma space, it will be ranging in this particular range of 13,500 to 12,500. But if you see, if it breaks above 13,400
on the upside. You may see it is stretching to these levels, and if you are uh, having a a negative or distribution is over at 13,500, we may again see uh, downward momentum to 12,600. For now it is positive, and I think at 13,200 it will get levels of 13,500. I'll move on to the next slide, and the next sector, CNX IT. अगर आप सिंपली बात करें तो CNX IT, I think IT companies will have the best result in coming quarters, simply because we have seen rupee depreciating against dollar to 68, 67 levels, and appreciated dollar will turn out the best for IT stocks. IT stocks में आप देखें तो काफी कुछ we have seen गुड बाइंग एट लोअर लेवल। विप्रो आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से इतना जल्दी कोई स्टॉक रिकवर नहीं हुआ। जो विप्रो मेरे ख्याल से 572 आया है आज क्लोजिंग दिए। वी हैव आल्सो सीन दिस पर्टिकुलर काउंटर बॉटमिंग आउट एट 525-30 लेवल्स, एंड एक 50 रुपए की चाल उसने ऑलरेडी दे चुका है ये एक हफ्ते में, एंड मेरे ख्याल से आगे भी कंटिन्यू करते रहेगा। CNX IT will be the, I think, outperforming sector for these quarters, because we have seen a continuous amount of appreciation in rupee, and whatever the fundamentals are coming from US are good, their economy or their GDP, and the data as well, because I think US unemployment has been down to 40 years low at 2,50,000. 2,50,000 आई थिंक, एंड वहां पर एक आप देखें तो यूएस जॉबलेस क्लेम्स 40 इयर्स के लो पे थे। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट IT industry will be, I think, the outperforming counters in this particular quarter, and would be having good earnings in their quarter two of FY16. The prices are actually in a broader trading range. This is the support line at 11,100. We have seen price falling from 12,300, and I think this was basically the global sell-off which we have witnessed in the market, and prices came down to 11,200 and have reversed, and will go back to 12,400. So IT space has a lot better return in coming time as compared to other sector, because it has already reversed on the downside. The risk reward in the particular space is quite favorable. I think 11,100 will be good support formation, and we might see another 1,000 points rally odd to 11,400. So you need to understand, you need to keep eye on IT stocks especially, uh, which will be good. If someone is looking at a 3 month or 6 month time horizon, I think they will pick up their momentum, especially stocks like HCL Tech. I've recommended this in past as well, but we have seen it having a resistance at upper levels of 720 and 30, but I think at 682 as well it is quite attractive. Other than this, we have Exaver Technologies, or you can go for some of the mid cap space like NIIT or KPIT. They are good as well on the charts, but I think if you have a 3 month or 6 or 4 month time horizon, I think IT industry will be doing much better than other stocks in the market. So you need to keep an IT stocks. Any specific counters breakout will lead to a nice rally in IT stocks in coming trading sessions. CNX Auto is completely correlated to Nifty as well.
and auto stocks as well, because if you see the price formation has been same in these particular counters. Somewhat CNX Auto, a few of the stocks have outperformed the Nifty in past few months. I'll give you an example of that as well. But you see, the price have pattern have been same. So if we are talking about Nifty to be fill particular gap, which I showed you previously, that this particular gap in Nifty was also there, and if we are expecting Nifty to fill this gap, so IT auto sector I think will be completely following it. Uh, how IT auto stocks outperformed Nifty is, if you can look at Ashok Leyland, uh, जनवरी में आप देखें, फरवरी में मार्केट ने एक जो गिरावट दी है 9,000 लेवल से करंट 7,600 लेवल्स तक की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट डिसेंट करेक्शन इन द मार्केट, बट अगर आप एक पर्टिकुलर काउंटर देखें लाइक अशोक लेलैंड, समवॉट एक 47 रुपीज़ की वहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था उस पर्टिकुलर का चार्ट पे, एंड 47 रुपीज़ से इट हैज
Hello, I hope I'm audible. We have had a technical glitch. Sorry for that. I'll take 2-3 slide back and try to explain each and everything again to you. Yes, CNX Auto. I was talking about this particular stock, and I've also shared 2-3 stocks. While I think you were not able to listen to me, I think जो मेरा पहला काउंटर था वो था अशोक लेलैंड, and this particular stock has outperformed Nifty in past few months, and जहां हमने निफ्टी में एक करेक्शन देखा है for almost like 9,000 से 7600, अभी रिसेंट की बात करें तो, जबकि ये स्टॉक ने एक 46 के लेवल से 4600 के लेवल से 4600 के लेवल से हमने इसको डबल होते हुए देखा है टू 95 रुपीज। तो ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने एक ओवरऑल सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, एंड आई थिंक 47 के रुपए के आसपास उसमें ब्रेकआउट हुआ था, एंड उसने ऑलमोस्ट अपने आप को डबल कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर काउंटर है जो आप बाय एंड डिप्स के स्ट्रैटेजी के साथ रख सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म अगर आप मेरे से पूछेंगे तो टीवीएस मोटर इज समवॉट गुड एट करंट लेवल्स, 220 के ऑड लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इट हैज रिवर्स फ्रॉम 210 लेवल। प्रीवियसली भी इस पर्टिकुलर काउंटर ने 210 रुपए से एक अच्छी रैली दिखाई है, ऊपर में 270 तक के लेवल्स दिखाए हैं। तो करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक काफी लुक्रेटिव है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से। मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर ऊपर में हमें 245 एक आने वाले सीरीज में दिखा सकता है। अगर 245 के ऊपर अभी हम ब्रेकआउट करते हैं तो विल हैव 260। नीचे इसमें there is a good support at 205 to 210, so one can put stop loss as per his trading capacity on these levels. सेकंड काउंटर मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानना भी चाहेंगे, टाटा मोटर्स एक पर्टिकुलर काउंटर है जो अंडर परफॉर्मर रहा है निफ्टी का, and we have seen a continuous decline in this particular counter, lower top lower bottom formation, somewhat एक 280 levels पे ये रुका भी था, बट हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है रिसेंटली। एक देर इज अ टर्न इन दिस पर्टिकुलर काउंटर, एंड 305 310 के लेवल से एक रिटर्न हुआ है इसमें, एंड देर इज, आप इसे शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं या इसमें एक वैल्यू बाइंग बोल सकते हैं, बट आई थिंक एट 230-40 लेवल्स अगर आप एक लंबा निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स एक बहुत लुक्रेटिव है जिस पर्टिकुलर लेवल पे, जो एक से 1.5 साल का नजरिया रखना चाहते हैं। समवॉट बिकॉज चाइना में जो हमने गिरावट देखी है, एंड देयर इज अ slowdown in the economy, it has affected the revenues of JLR, and they have contracted by almost 18 to 20% in their bottom line, and जिसे बोल सकते हैं आप एक बॉटम फिशिंग है, वो हम होते हुए देख रहे हैं टाटा मोटर्स पे। मेरे ख्याल से अगर कोई थोड़ा सा भी लंबा निवेश करना सकता है और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आई थिंक टाटा मोटर्स इज गुड, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आई वुड बी बेटर एंड ओवरवेट ऑन टीवीएस, बिकॉज एट 220 लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। 205 का भी एक स्टॉप लॉस लगा के आप 245 तक के लिए शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से प्ले कर सकते हैं। दिस इज अनदर sector, infra. We have seen a lot of volatility in this particular sector, and the prices have given this breakout of trend line below 3220, and prices went back to 2860, same as with Nifty. Somewhat double bottom formation is there, and I think here as well, if you see, the gap has been there on the chart, this particular chart। अगर आप इंफ्रा स्पेस की बात करें तो एक अदानी पोर्ट्स ने आउट परफॉर्म करा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। एक 330 रुपए से कंटिन्यूस रैली दी है, 365 रुपए भी अरन भाव है, बट मेरे ख्याल से एक टॉप फॉर्मेशन हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर वो
75 levels को break करता है तो well and good, I think it would continue, but I think there is a correction due in that particular counter, and I think 15 to 20 rupees correction cannot be ruled out. Though I would say capital goods में BHEL has been the worst performer. मेरे ख्याल से एक continuous downfall देखा है उस स्टॉक में 320 लेवल से 210 220 पे it has bottomed out, currently coming at 228. मैंने आज जी बिजनेस पे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी ये पर्टिकुलर काउंटर रिकमेंड करा है. I've suggested to buy 250 deep out of the money call option at around 4 rupees. My targets are 8 and 12 in in that particular counter. Risk is quite low. One can put a stop loss as 1 rupee, 1.5 rupee. So risk reward is quite favorable in that options. 250 call option. I believe that bottom has been formed in this particular counter, and at the same level, we have seen this particular counter giving a rally of almost 80 to 90 rupees from this level. So I think if it sustains to 20, we'll have that deep out of the money call option to be at the money or in the money in coming trading sessions. And I think 8 से 12 रुपए आप उसका लक्ष्य देख सकते हैं. You need to understand that we are new in the they have just entered a new series, September series. तो आप 2 हफ्ते का एक नजरिया रखें उसमें. रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है. 4 रुपए के 4 रुपए पे आ रहा है. 2.5 रुपए की आपको एक रिस्क रहेगी मार्केट में, ऑलमोस्ट 2500. सॉरी. एंड माई टारगेट्स वुड बी 8 and 12. उसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर काउंटर की बात करें इंफ्रा में से, तो आई थिंक पीटीसी इंडिया ने आज अच्छा खासा रिटर्न दिया है. Was almost up 5 to 6%. From current perspectives as well, I think it has tendency to go higher. Uh, other counter is JSW Energy coming at 76 rupees. I believe that it can test 86 to 90 rupees in a few next few weeks, and one can see it to 85 86 levels, and one can put a stop loss at 68 if wants to take a position. JSW Energy is one of the counters. If you want to have an overall view, this particular space, I think it will follow the Nifty, and if we have a break above 3020 levels on infra space, I think BHEL and uh, PTC India and JSW Energy will be one of the counters you need to look at. Next is Realty. Realty has been the worst performer, I would say. Why? Because most of the companies have high debt. If you want to know example, JP Associate is one of the stocks. Market capitalization is 6 to 7,000 crore, and they have a debt of almost 70,000 crore. That is almost 10 times. Means even if you are earning 1 rupee, you have 10 rupees to be given to uh, people outside you have borrowed. So if you are having that much debt on you, I think realty stocks is one of the sectors which is to be kept awake, because there is much to be needed on ग्राउंड स्पेस एज वेल. बहुत सी चीज़ें आई. एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की भी हम बात कर रहे हैं, जो एक हो सकता है, प्लस एक रेगुलेटर भी हो सकता है. देर आर सम पैकेजेस अराउंड इन जब बजट. बट ये जो है इनकी जो रेवेन्यूज रहते हैं रियलिटी स्पेस के, काफ़ी इफ़ यू से टाइम लैग रहता है उनमें, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ हाई डेट ऑन देम, बिकॉज दे नीड वर्किंग कैपिटल टू बी there in their balance sheet to work on various projects at a given time, while they have revenue which has a time lag period. So realization of the revenue is quite delayed in this particular sector. But
इस वजह से जो इनकी डेट है which is very high played. Now if you consider JP Associate as an example, you can see the debt is almost 10 times of their market capitalization. So that's why these stocks are being beaten down. अगर मार्केट में 2% 3% की में हम गिरावट देख रहे हैं तो आप मानकर चलिए रियलिटी स्टॉक्स में कम से कम 7 से 8% because they have a high beta as well. So you need to avoid realty space in this particular. Usually clients come to me and say, how I hope I'm audible. We are having a technical glitch, and I think I'll take it again. Reality sector I'll take again for each and every one of you. And will again share the stocks which I have discussed just now. I was talking about reality space and DLF. One of the counters you need to understand is Godrej Properties is good.
on the charts. I'll be discussing it later on as well. And this particular counter is going to give good result in coming few trading sessions. I've also recommended in one of the recommendations because the chart is quite attractive. But any companies from realty space like DLF, HDIL, or IB Real Estate are now to be kept in a avoid strategy. There might be short covering in the near term, but any downfall in the market or global markets will lead a downfall in Nifty, and these stocks are highly volatile and high debt in their balance sheet. So that's why it's in a avoid category. FMCG is another space. It is broadly into range of 21,100 to 19,600. I don't have any particular counter from this particular space because there isn't much action in the FMCG space. The demand is yet to be pick up. I think in September to November, we'll see a lot of demand in FMCG space. But if you want to have any particular व्यू आई थिंक ऑयल स्पेस जो मेरे ख्याल से आप एशियन पेंट्स हैं बर्जर पेंट और ऑयल से रिलेटेड दूसरे जितने भी स्टॉक है आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड बेस्ट बिकॉज क्रूड ऑयल ने उनको एक अच्छा खासा लोअर इनपुट कॉस्ट देंगे फंडामेंटली एंड देयर मार्जिन्स ऑन द टॉप लाइन विल be improved as well. So I think oil space is somewhat will be the best to have a 2 3 month time horizon like Asian Paints or Burgeon Paint. So one can look for paint stocks to be bullish in coming months because the demand will pick up for them post September and we'll see a continuous improvement in their margins as well because जो crude oil सस्ता हुआ है जो इनका एक मेजर इनपुट है वो इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हेल्प करेगा. Now these are the three stock picks. I've tried to say use charts same on the same slide. ये जो पहला काउंटर है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज ऐसे मैंने बताया था आपको. अगर आप देखें तो इट हैज गिवन अ पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट एज वेल. द करेक्शन हैज बीन देयर. Overall trend formation for now post this has been up. This is I think one of the places where we have seen turnaround, and this is one of the inverted head and shoulders breakout. If you see, you can if you are known to technical analysis, you can also say cup and handle somewhat, but prices have given a decent breakout. सॉरी एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप देखें तो लोअर एक ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट करा है currently at 305. I think the prices are very lucrative and ये जो एक hurdle है it will be crossed based on the bullish momentum of RSI. Somewhat it has bottomed out as well on the chart previous as compared to previous low, and I think आने वाले टाइम में will have a target of 335 to 350. One can put a stop loss at 290 on the downside. Please maintain strict stop losses and do not overtrade. Do not put all your capital. Trade with uh, small amount of capital as these are we on a weekly basis. So I don't want it to block your margin as well. So please trade with a small capital. My second pick is Magma FinCorp. अगर आप इसका चार्ट देखें तो समवॉट में हमने बहुत पहले एक बार सन टीवी रिकमेंड करा था 280 लेवल्स पे जो एक 400 रुपये का रनअप दिया था एंड मैंने उसमें पर्टिकुलर काउंटर में एम्फोसाइज करा था कि प्राइस पैटर्न जो होता है विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट on the chart. So currently at these levels, I think the risk reward is quite favorable. Charts के lower end पे है. Current इसकी CMP है 86. I think ये continue करेगा. अब RSI देखें तो it has already bottomed out. एक positive crossover भी है. I think on the upside the target would be 96. वाइल अगर एक 96 के ऊपर हमने ब्रेक क्लोजिंग देखते हैं तो 106 नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो ये हाई इसका फॉर्मेशन है सेम लेवल इसका रहेगा. जब भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम रहता है तो एक प्राइस पैटर्न फॉलो रहता है. इफ वी सी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल अबव 96 आई थिंक
the breakout would be taking price to 150 levels in no time, but we need to see break above 96. Bottom fishing can be done on this particular counter. Magma FinCorp is really good on chart. I think one can go long with a time horizon of 3 months as well. Put a small stop loss at 78. If you are going for 3 month time horizon, you can put a stop loss at 72 level or 70 level, and put your targets at 106 to 130, and extending it to 150 for next 3 months. And my last would be from the IIT space, NIIT, currently coming at 466. The prices are in a broader range of 500 to 430. The prices have somewhat bottomed out. The RSI is also giving a positive crossover. This is the upper resistance line. I think 500 would be the first target somewhat here. If we see break above 500, we may see price stretching to 530. One can put a small stop loss of 440. I think 26 rupees is stop loss is there. The target is almost of 35 to 40 rupees. Breaking of 500, we may see 525 in no time. Now these are the three stock picks. If you have any queries, you can ask, and I'll try to answer them one by one. And if it goes unanswered, please mail it to info@epicresearch.co. I'll try to answer them there as well. These are some of the tools you can access. These are some of the tools you can access at our website: track sheet, research reports, daily and weekly basis, weekly reports. You can also visit our Singapore website at www.epicresearch.sg. I'll be happy to take your queries. One of the question is about IOC. Uh, I don't know if you have any position in this particular counter, or you just want to know my view. IOC at current 408 level, we are seeing some kind of correction in this particular stock. Went up to 460. We have seen almost 10 to 20% correction at 408. I think 388 or 385 is somewhat a good support in the near term. And if you are having any position, you can put a stop loss at this level, and hold this position. And oil marketing companies are expected to report a much better profit due to lower crude oil, and they can improve their top line as well as bottom line. That's why we have seen rally in the uh, oil marketing companies, because they will be improving not just their top line but their bottom line as well. बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्काउंट हो चुकी है, बिकॉज एक अच्छी खासी रैली हमने सभी स्टॉक्स में देख ली है. सो यू हैव अदर स्टॉक्स जो एक लोअर क्रूड ऑयल से बेनिफिट होंगे, लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स. So you can look at them as well. One of the question is of SBI. One of the people is holding few shares at 250. Of course, if you are looking for 6 to 10 months, well, you can hold on to this particular share, because on a quarterly chart, if you see, it's making a high top high bottom formation. Somewhat correction has been there. मेरे ख्याल से अगर आप इतना लंबा नजरिया रख रहे हैं, तो you can hold on to this. If you want to accumulate, you can accumulate at, as I said, 240 and 230. एक बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन है. तो आप जो एसबीआई अगर 8 से 10 महीने रख रहे हैं, तो बिल्कुल जो एक पॉलिसीज हैं लाइक जनधन योजना एंड दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस ऑफ
at a national scale which has been implemented. So and financial inclusions और जो एक capital adequacy का भी बात हो रही है, तो I think अगर 8 से 10 महीने का व्यू रखेंगे तो of course it will give a positive return. If you are expecting some kind of a target, I think the top of this particular counters like 290 to 305 will be 8 to 10 month target view. मैंने सबसे पहले ही जब बैंक इंडेक्स की बात करी तो मैंने बात करी थी एसबीआई की. आई थिंक हैवी प्लेयर है तो एक थोड़ी सी प्रीमियम के साथ ट्रेड करता है. सो एसबीआई इज गुड बेट इफ यू आर हैविंग अ 8 to 10 month view. Your next question is of K in India. I think any stocks related to commodities avoid, but K in India is somewhat suffering because of the amalgamation of Vedanta and Kane. I think it has hurt his top line. I don't know if you have any holding in this particular counter. Uh, so if I could suggest you specifically, you can post your query if you have any particular holding, then I will be able to answer it in brief as well. Yeah, one of the questions of related to commodity stock was Tata Steel. टाटा स्टील somewhat bottom fishing is a scene, but हमने देखा है commodity related stocks like हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील जहाँ हम bottom fishing करने गए इन particular counters में, we have seen pricing prices being correct. So same is with टाटा स्टील. करंट लेवल्स पे अगर आप बॉटम फिशिंग करने का सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू, बिकॉज अगर आप कभी भी कमोडिटीज से रिलेटेड स्टॉक में ट्रेडिंग करने चाहते हैं तो मैं एक समझता हूँ आप 3 महीने पहले देखिए इफ देर इज अ टर्न अराउंड इन देयर बैलेंस शीट और इन देयर परफॉर्मेंस इन द स्टॉक. और जब आप एक लंबा नजरिया रख रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि आप थोड़ा सा एक पहले देखिए. अगर हमें एक 3 मंथ में उनकी इम्प्रूवमेंट दिखता है क्वार्टरली रिजल्ट में, तो तभी हम उसमें निवेश की सलाह देंगे. वरना आप देख रहे हैं कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे थे, समवॉट दे हैव रीबाउंडेड. But at 225 level, I would say you don't have to invest in Tata Steel. If you are having a long-term view, you can go for a year or 2 year, 1.5 year basis to add into your portfolio. But as a short-term trading perspective, I would avoid. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको सलाह दूंगा अभी खरीदने की तो वो एक शॉर्ट कवरिंग या बॉटम फिशिंग होगी. बट जब भी हमने देखा है कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग करने जाते हैं तो वी हैव सीन इट टर्निंग आउट टू going down as well. So trend is still down in these counters. Short covering आएगी, but हम उससे ज्यादा अच्छे स्टॉक से मार्केट में प्ले करने के लिए. ITC bought at 303. ITC is for a long term. Anyone seeking to make dividend in their portfolio, I think ITC has been consistent, providing delivering uh, dividend on a regular basis to investors. So if you are holding ITC, you can have a long term view. 280 290 बहुत अच्छे सपोर्ट है, आप उसमें बने रहिए. आई थिंक मेरे ख्याल से एक जहाँ निफ्टी में एक बुल स्ट्रक्चर अगर आप ओवरऑल देखिए पॉजिटिव ही है, तो जहाँ एक बुल स्ट्रक्चर में हम 8350 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, मेरे ख्याल से यू कैन सी आईटीसी गोइंग बैक टू 350 370 लेवल्स. मेरे ख्याल से डाउन साइड मैक्सिमम इसमें 280 लेवल्स तक ही रहेगा. सो वन कैन होल्ड आईटीसी.
If you have any more question, you can ask. I'll be ending this webinar in next 2-3 minutes. One of the question is related to ICICI Bank. ICICI Bank is one of the bank, अगर आप fundamentally बात करें तो it has posted a much better return as compared to other banks in private sector and improved in their quarterly as well as year on year performance as well. तो अगर आप थोड़ा सा long term view रखना चाहते हैं ICICI Bank में, so you can go 270 to 80 levels पे भी attractive है. I think the downside is quite limited. Uh, Hello. ICICI Bank, yes, have given a much better result. I think 277 levels. I think recently जो इसका लो बनाया था चार्ट पे 260 से 65 के लेवल्स पे था. बट मेरे ख्याल से आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाना चाहते हैं तो यू हैव मच बेटर स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक. From trading point of view, I've suggested Godrej Properties, Magma FinCorp. If you have another counter, if you want, I think TVS Moto is good for the targets of 245. The stop loss will be 210. If you have ICICI Bank at 316 levels, you can hold it. Please have a time horizon of 6 months. I think the prices have started to bottom out. We have seen some value buying uh, at lower levels, so you can hold for 6 to 8 months. You will have your targets and your cost price as well, but you need to understand, you need to have a time horizon. You can mail your queries at info@epicresearch.in or info@epiclearning.in. I'll try to answer them in person. And thanks for being such a good listener. I'll be ending this webinar now, and we'll hope to meet again next week with much interesting topic. You can mail us if you want to have discussion on any other particular topic for next week. Thank you so much. Have a good day.